Hello students, today we are going to study chapter 8 body movements. This is part 1. So first of all, what is movement? What do you mean by movement? Movement means you are changing your position of any of the body parts, or it can be you are changing your position from one place to another. For example, आप लोग कहीं घूमने जाते हैं तो आप अपने घर से किसी की पार्टी में जा रहे हैं, right? So it is a kind of movement. Now, if you're looking towards the monitor or you're looking towards the video, then also you're writing something, or if you are drinking or eating something, that is also a kind of movement, right? So basically, what is movement? It is a change in the position of any part of the body with respect to its axis is called movement. Axis का मतलब है कि वो अपने साथ जुड़ा हुआ रहता है. जैसे कि अगर आप किसी बॉडी मूवमेंट की मूवमेंट देखते हैं, तो जब आप अपना हाथ हिला रहे हैं, तो क्या वो हाथ अलग हो जाएगा आपसे? नहीं. वॉट एवर यू आर डूइंग इज डूइंग विथ योर हैंड्स. तो वो कंटिन्यूसली आपसे, आपकी बॉडी से अटैच्ड है, right? So let us have some examples. For example, mostly the living things have movements. अब नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे रोबोट्स होते हैं या कुछ चीजें होती हैं, उनमें मूवमेंट होता है, बट दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन द लिविंग पार्ट, राइट? तो नॉन लिविंग और लिविंग अलग अलग चीजें हैं. तो हम लिविंग एग्जांपल्स देख रहे हैं. फॉर एग्जांपल, प्लांट, देयर इज अ प्लांट नेम मिमोसा प्लांट. ठीक है, इसको टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं. So it provides movement. प्लांट्स बेसिकली जो मूवमेंट दिखाते हैं वो बहुत स्लो होता है, तो हमें दिखाई नहीं देता, बट इन दिस प्लांट वी कैन सी दैट. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज मूवमेंट ऑफ फिश. आपने फिश को तैरते हुए देखा होगा, फिश एक्वेरियम में देखा होगा, तो इट इज लाइक अ मूवमेंट फॉर देम. मूवमेंट ऑफ बर्ड्स व्हाइल माइग्रेटिंग. कहीं पे बहुत गर्मी होती है, बहुत ठंड होती है, तो वो उस मौसम में नहीं रह सकते बर्ड्स, so they travel to another places, so that is also kind of movement. Now we are going to see a beautiful example of Mimosa piduca, which is basically the touch me not plant. Okay, so this video I have taken from YouTube, and I'm just showing you here. Just listen to it. See, you can see the movement. जैसे ही plant को touch किया, it leaves started folding. So it is also kind of movement. See, it's a beautiful example of movement. Now the point is that why we do movement, why movement is important. Okay, there are a lot of reasons that we have to move. Like,
for food and water. Animals move from one place to another for food and water. Even humans also move from one place to another in the food of jobs, in the food of to find jobs, to have good food, good luxurious life, you know. Then we have next is protect themselves from their enemies and predators. Then move from an unfavorable environment to a favorable environment, right? And have suitable places for laying eggs or rearing their young ones. Okay, so few birds they lay eggs in a suitable places like जहाँ पे secure हो, safe हो, वहीं पे egg lay करते हैं, so that when the chick come out or the baby come out, then they can have a good atmosphere to live. So basically, we do movement because of these reasons. Now we have movement in humans, which is a skeletal system. Basically, the skeletal system is only responsible for our movement, right? You have also studied in your previous classes that we have 206 bones in the adult humans, and in newborn child they have 300 bones, right? So basically, the framework of all the bones in the body of a human is known as skeleton. So because of the skeleton only we have a movement in our body, and we also have structure of our body. Now, what is the function of skeleton? It gives shape and support to the body. Yes. It protects the delicate internal organs of the body. Inside our body, there are our internal organs, which is heart, lungs, liver. These things are protected by skeleton, right? Second is it helps in the movement of our body parts, right? It helps us stand, run, walk together with the help of muscles. So this is because of the skeleton that we are able to do the movement in our daily life. Now let us have a look about joints, right? Joints are basically a place where two or more than two bones meet. ठीक है, जैसे कि आप अगर अपने हाथ के फिंगर्स को मूव करते हैं, तो आप अगर ध्यान से टच करके देखेंगे अपने फिंगर्स को, तो उसमें आपको अलग अलग छोटी छोटी बोन्स का सेगमेंट समझ में आएगा. एक फिंगर में 3 सेगमेंट्स दिखाई देंगे आपको. यू कैन सी इट ऑन योर ओन. ठीक है, so you can see that this is a joint. How it is a joint? This is a one bone and another bone, and there is one more thing, it's a muscle. So two bones are joining here in our knee. So this is also a joint. So basically, what is a joint? It is a place where two or more than two bones are meeting together. Okay? And in simple joints where two bones meet. And there are two type of joints. There is a simple joint and there is a compound joint. In simple joint, only two bones are meeting, like in this knee. But in compound joint, more than one bone is meeting. Like I'll just show you here, this shoulder one. Here, more than two bones are joining. Okay, so this is a compound joint. Now let us have two types of joints. There are two types of joint. One is movable joint and another is immovable joint. You know what is movable. Move का मतलब क्या होता है? हिलना. So this joint can move. Okay. But immovable joint means these joints cannot move. They are stick at one place. Okay, they cannot move. If we want to move them, then they will break. Right? So in movable joint, we have 4 types. Ball and socket joint, hinge joint, pivot joint, and gliding joint. Okay. So in ball, and we are going to discuss further the functions of these joints, and also in immovable joint, we have fixed joint. Now let us talk about ball and socket joint. In ball and socket joint, you can see that it is having two things, right? This is a shoulder bone and this is your humerus. Humerus का मतलब क्या होता है बेटा? Humerus का मतलब होता है that it is your long bone which is attached to your collar. Okay, so in such a joint, the rounded end of one bone fits in the cavity of the another. इस तरह से ढक्कन की तरह होता है ये. एक जैसे कटोरी होती है ये, और ये जो बॉल है ये आपका बोन है हाथ का, ये आपके ऐसे कॉलर से जुड़ा हुआ है. ठीक है, so this is known as ball and socket joint, and because of this you can move it in all directions. आप उसको 360 डिग्री घुमा सकते हो, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह घुमा सकते हो, राइट? And it is having a movement of 360 degree. 360 डिग्री का मतलब क्या है कि आप अपने हाथ से एक सर्कल बना सकते हो ना, ऐसे मूवमेंट करके एक हवा में सर्कल बना सकते हो. यू कैन ट्राई, right? You can easily do it.
So that is because of its movement, which is 360 degree. And these joints are found in shoulder joint and in hip joint. आपका जो hip है, मतलब जो पैर और जो आपका hip joint हो रहा है जहाँ पे, वहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलता है, और आपका जो शोल्डर है, जो आपका कंधा है, वहाँ पे भी मिलता है. ओके. Now we are coming to pivot joint. Pivot joint is basically in your neck, ठीक है, and it is a cylindrical bone rotating in a ring. जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ रिंग. ये आपका नेक हो गया, और ये आपकी आपका जो ऊपर का हेड है, ये इस तरह से हो गया. तो यू कैन सी द एरोज. ये ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है. तो आपने हेड को मूव करके देखो, फॉरवर्ड जाता है, बैकवर्ड जाता है, राइट जाता है, लेफ्ट जाता है, पूरा तो नहीं घूम सकता, राइट. तो इट इज ओनली 180 डिग्री, right? And this pivot joint is only found in your neck part. Okay. Then we have hinge joint. Hinge joint is basically like a door. आपने door कभी open करते हो, कभी close, right? तो एक ही direction में move कर सकता है. So it can move upward and downward only, right? So you can see कि आपके जो हाथ है, जो आपका elbow है, आप उसको मूव करके देखो. आप ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, लेफ्ट की तरफ भी पूरा नहीं झुका सकते, और राइट की तरफ भी पूरा नहीं झुका सकते, राइट. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द हिंज जॉइंट, एंड हिंज जॉइंट कैन ओनली go to upward and downward direction. ठीक है, you can see like this. So this is a hinge joint, and these joints are found in elbow, fingers, knees, and your toes. Then we have a gliding joint. ठीक है, you can see this is your gliding joint. So it allows bones to glide over each other, providing little movement in all directions. You can see यहाँ पे दो bones है जैसे, तो ये एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, है ना. You can see this is your hand. जो आपका हाथ, जो रिस्ट है, वो आपके जो हाथ से जुड़ा हुआ है, ये वो वाला पॉइंट है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने सारे बोन्स हैं, ये एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, है ना. ये इसके ऊपर इस तरह से ज्वाइंटेड है. So this is the carpals, and these are the your bones of the fingers, right? So it is working like a overlapping thing, मतलब एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, और because of this it can only move movement in all directions. जैसे कि आपका ये लेग का हो गया, you can see in this picture. आप अपने एंकल को भी सिर्फ ऊपर नीचे कर सकते हो, है ना. अपने पैर के इस पॉइंट को आप सिर्फ ऊपर और नीचे ही कर सकते हो, और आप नहीं कर सकते कुछ भी. सो दिस इज अ ग्लाइडिंग जॉइंट. ये आपके रिस्ट में पाया जाता है, और आपके एंकल में भी पाया जाता है, ठीक है. नाउ वी हैव दिस फिक्स्ड जॉइंट विच इज अ इमूवेबल जॉइंट. जैसे कि ये वाला कभी भी, ये सारे जो जॉइंट्स हैं आपके, ये फिक्स्ड जो जॉइंट होता है, ये कभी भी मूव नहीं कर सकता. जैसे कि आपका स्केलेटन, सॉरी, जैसे कि आपका स्कल पार्ट, आपका जो हेड है, उसमें कोई भी जॉइंट मूव नहीं हो सकता. ओनली एंड ओनली योर लोअर जॉ कैन मूव, है ना. अपर जॉ से लेकर पूरे हेड तक जितना भी पार्ट है, वो सारा का सारा फिक्स्ड जॉइंट है आपका. ओके, so this is an example of immovable joint. Now let me show you the difference. See, in this ball and socket joint, this is your hip joint. यहाँ पे देख रहे हो आप, एक बोन ऐसे कटोरी की तरह है और एक बोन बॉल की तरह. That is why it is known as ball and socket joint. ठीक है, so it can move in all arrows, right, in every direction. Then we have hinge joint. You can see it is your elbow, right. It is your elbow, and you can see that you can only go upward and downward. Then we have gliding joint. These are your fingers, so you can see कि सिर्फ ऐसे और ऐसे ही मूव हो सकता है ना, एक के ऊपर एक है. And this is your pivot joint. Pivot joint, you can see that it can only move like this and like this, है ना. ये आपके neck का portion हो गया. So we have done with this part, and the next part we will be having other topics. So in the next part I will upload the another topic. Thank you.